आई एम डॉक्टर RK ओझा, बनारस ग्लोबल टाइम्स से। मैं बनारस ग्लोबल टाइम्स का चेयरमैन हूँ और इस समय मैं AIG हॉस्पिटल हैदराबाद में मौजूद हूँ। मैं आया था यहाँ पर अपने पिताजी के इलाज के लिए। उनकी कुछ समस्या थी स्टमक की, और जब मैं इस अस्पताल में आया और मैं डॉक्टरों से मिला तो मुझे लगा कि इस अस्पताल के बारे में और यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में हमारे पूरे पूर्वांचल को जानने की ज़रूरत है। तो मैंने डॉक्टर GV राव से रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर राव, हम 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए साथ बैठते हैं और कुछ आपके अनुभव साझा करते हैं। ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फील्ड की बात की जाए, पेट की बीमारियों की बात किया जाए, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो पेट की, लीवर की, गॉल ब्लैडर की, तो डॉक्टर राव का नाम दुनिया भर में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। और आज वी आर फॉर्चुनेट कि हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो सर, काइंडली गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट, योर नेम, योर हॉस्पिटल नेम, and then we will proceed. Thank you so much, Ojha Sahab, for the honor of this. At the outset, let me thank Dr. Ojha for the honor of my screen space in Benaras Global Times. Thank you so much, sir, for the honor. Thank you, sir. Restored. I am Dr. GV Rao. I am the director at the AIG Hospitals and Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad. I also head the Department of Surgical Gastroenterology, Minimally Invasive Surgery, Robotic Surgery and Transplantation Services. We at Hyderabad, over the period of time, in the last 3 or 4 decades, tried to establish a center of excellence in gastroenterology with all the support services. We are able to succeed this with the help of a lot of like-minded people who are interested in clinical medicine, research, and we are very fortunate that we have almost 400 consultants from reputed institutes from across the country and abroad. 400 doctors हैं, 400 doctors. 400 doctors who have joined us and working in par or in the same terms as what happens in major institutes across the globe. Be it be All India Institute of Medical Sciences, be it be PGI Chandigarh, SGPGI, or you take international hospitals like Mayo Clinic or any of those clinics. So we work in par or in similar lines as what these major institutes are working. Doctors are working here full time, and majority of them are also involved in research in various aspects, which is helping in better the clinical services that we provide to the patient population in general. आप इलाज भी करते हैं और आप रिसर्च भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। So institutes actually it's the institute responsibility not only to treat but also see if we can evolve the present medicine and also to see if we can improvise on the current medicine, be it by techniques, technology or any basic research. So all the doctors here, the incentive for the doctors to work in institutes like this is research, because this research differentiates the doctor working in our place from any doctor working in any other place. So he is known not only for his clinical work but also the research he does, and that is translating into clinical practice. And it's a very big thing. And it's a huge impact. Like you people are able to convey a message to billions of people across the country. This research is changing the way in which we practice medicine. We call it translational research, in the sense like we do it today, it gets translated into medicine for better outcomes in future. ये सर बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए, भारत के लिए, फॉर इंडिया, दिस इज ए very big encouragement. Yeah, the government of India is also supporting in a huge way. Right. Actually, the Prime Minister has given a statement about how we can involve and how the government can support the research facilities across the country. क्योंकि अभी हमने
जो हमें हमारे ऊपर जो युद्ध थोपा गया भारत पाकिस्तान में, जो एक पहलगाम के बाद एक संघर्ष हुआ, उसमें हमने देखा कि जो इंडिजिनस वार इक्विपमेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं आज हैदराबाद में AIG हॉस्पिटल में, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, भारत के लिए, कि हमारे देश में मेडिसिन में आपकी लीडरशिप में रिसर्च यहाँ पे 400 डॉक्टर्स कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि रिसर्च करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है काम करने का। बिल्कुल सही बात साहब, आप जो बोले थे, आप बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ मैं। मेजॉरिटी, आई विल नॉट से 100%, वॉट एवर रिसर्च इज डन अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया और इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन साइंटिस्ट आर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इट। भले वो दूसरे देश में रह रहे हैं, भले वो दूसरे देश में हो, बिकॉज दोज डेज द फैसिलिटीज वर नॉट सो encouraging, maybe they went, but with the present change in the entire atmosphere in the country right now, we see a lot of reverse brain drain that is coming, and also the talent which used to go now is not going now because they are having good facilities now, and we see very bright future for India in future if this continues, and the next decade also is going to be real game changer for India. It's there is no doubt, Dr. Rao, that we have been talking a lot about it, and for a very long time, that our doctors, our engineers are building America and other countries. Absolutely right, sir. If you see artificial intelligence, 40% of the work is done from India, basically because of the IT support. 40%. Nearly 40% of the work, and 40% of the publications that are coming are from doctors who are from India. It's huge. It's a huge impact. Geographically, we are very small. 40% contribution is a huge contribution. Huge contribution, especially to one sector, IT sector, we are contributing huge. And also right now, initially it used to be a lot of dominance from the West, but of course we realized that we've been practicing actually जो Western जो guidelines थे वो practice अपने पास practice कर रहे थे, but we have realized that the Western population is not equal to the Indian population. Our people are genetically different. We have disease, different disease pattern, different thing that we have in our own, and our mode of treatment should be individualized based on the data that we have from our own country. So recently, if you see, lot of things have happened from the data that is coming from our own country that is changing the pattern of treatment for Indian patients. Treatment protocol of the West is not entirely followed up. Absolutely. Now we are making the changes. We are making our, Right. see, the treatment protocols are different from Indian patients. We cannot equalize, East is not equal to West. It's told every country has got a different this thing actually. तो मुझे लगता है कि हवा अब उल्टी बहना शुरू हो गई है. जरूर सर. अब हवा बह रही है भारत की तरफ. भारत की तरफ. भारत की तरफ. भारत की तरफ. तो इट्स ए वेरी गुड थिंग कि अब रिसर्च की, टैलेंट की और ट्रीटमेंट की हवा जो है अब पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, और हमारे लिए बहुत और बहेगा भी सर. फ्लड भी होगा. हाँ, सब कुछ भी होगा. डॉक्टर सुनामी भी होगा. सुनामी भी होगा, मतलब टैलेंट का सुनामी होगा, सुनामी के साथ रिसर्च का सुनामी होगा, रिसर्च का सुनामी होगा. इट्स ग्रेट. डॉक्टर राव, आई थिंक यू आर 50s or 60? Yes, absolutely. So Dr. Rao, as a doctor, what do you think of yourself? Happy, very happy, or still something is left? You want to do a lot more? Yeah, I'll say that I'm very happy, but still we want to do a lot more. See, all of us have got limited period of time on this earth actually. Nobody can dictate our lifespan. It's all predetermined. I believe in God. So it's predetermined, and environmental factors will play a part, but it is not predetermined. So in the limited period of time that we can do, so I feel that time has to be best utilized. Different people have different perspectives, but when you have taken a medical profession as your profession to treat people, I think we should have something beyond what we are doing in clinical practice. Suppose we can do something more.
like you people Again, are I able think to research. reach, research, and at the same time rich people. Rich people. To And reach people. research, लोगों like पास you people पहुंचना are है। able to reach, वहाँ तक पहुँचना है। मुझे आपका जैसा एक मैसेज बिलियंस ऑफ पीपल का लाइफ चेंज कर सकता है। हो सकता है कि हमारी तरफ से एक मैसेज इट कैन प्रिवेंट अ डिजीज। Yes. Prevention is better. If it can prevent few people also, it is going to make a big difference. If I can prevent a disease in one family, that is going to support the entire family. Yes. Because most of the families actually, one single person is the breadwinner, and suppose if we can prevent a disease or treat this disease early or treat this effectively in a very cost effective form, I think it will make a big dent in our way we are dealing with the patients. सर, ये आपको इस बारे में कैसा लगता है कि हमारे देश का जो टैलेंट अभी है, वट एवर टैलेंट वी आर हैविंग इन आवर कंट्री, बिकॉज आई बिलीव दैट ए पर्सन हु इज डूइंग ए क्लास 4 जॉब, it is not a must that he is having the talent of class 4 job only. He may be having some job, he may be having better talent, but because he could not get the opportunity, so he is there. So if it is there, I think the research work in society also is needed, sociology also is needed to identify such talent and groom them for the betterment of our country. आपका बिल्कुल सही बात है सर। अब तक जो इंडियन टैलेंट जो थी वेस्ट की तरफ बह रही थी वो। सी वी हैव लॉस्ट दैट इनिशियल पार्ट बिकॉज वी डिड नॉट प्रोवाइड देम द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बट नाउ अभी लास्ट ए डिकेड, लास्ट 10 to 15 years, द एंटायर scenario has changed and we see lot of opportunities coming in different parts of the country. Both supported by the government sector, public sector, private sector, everything is supporting this thing and we are getting lot of funding from international agencies also. So talent is already there, infrastructure we are building up, IT has shown that we will be the leaders. Yes. The same thing is happening in pharmaceuticals, we are able to make the drugs for the rest of the country. I'm sure in the days to come we'll dictate the guidelines from this part of the world, which everybody can practice actually. And not only this, from our help actually other developing countries or underdeveloping countries can also be they could get benefit from what we are doing in our country. In international perspective, I feel firmly, very firmly, that people in other countries also, all over the world, most of the people, they like peace and simple life and good people, ethical people, still the majority in the society. Yes. I think if the leadership also comes in the hand of ethical people, or if we develop a good control over our leadership all over the world, then this society will become more balanced, more justified and giving equal opportunity to everybody. आप बिल्कुल सही बात बोले साहब। सी India was always seen as a country, developing country, but last decade or so it has shown that the image of the leadership across the globe has completely changed. People respect our leadership now. People take opinion of our leadership. People follow our opinion leaders. It's a big change. It's a big change that is happening. बहुत बड़ी change. And to an extent that we are able to firmly assert our views. Our views. Which now we are saying. How we are कि saying. भाई हम ऐसे चलेंगे. And we are able to, and it is being acceptable by. It is being accepted by the world. By the world across. That is the biggest change that we have seen in the last. And it's a very big pride for us. It's a huge pride for us actually, and we hope that this continues so that we can have, very strong India, and we can have very bright future for the Indian population in general. I think as a doctor,
you are having a very big impact on the society. Very small, sir. Very big impact. Very small impact compared to what you have. Because you are, as a doctor, you are helping patients, treating patients, and changing the lives of families. We are trying to, yes, we are trying to do our best within whatever resources that we have. Yes, sir, right. And people like you must be on the social forum. Thank you so much for. On the social forum also. The purpose of good people motivating the society and especially the not haves. हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन बहुत मीगर हैं. उस किसी बच्चे की कोई गलती नहीं होती है अगर उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो. बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है. वो जो बच्चा बॉर्न होता है हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में, वो बच्चा अगर उसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है तो उसकी गलती नहीं है. सोसाइटी एंड नेशन मस्ट टेक केयर ऑफ. बट एक्चुअली व्हाट आप जो बोले ओझा साहब बिल्कुल सही बात है. एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया, एन इंडियन, आई थिंक now compared to what the circumstances were there before, the circumstances are completely changing. Now the way it looks, every Indian will have some access to show his or her talent. And it is not that only medical specialty, there are so many specialities that have come. I think we have to identify people. The parents have to make sure that they see their children as a whole, to see their areas of interest and groom them into that particular specialities, not necessarily forcing them into some specialities which they are not interested. Every speciality has got its own importance in current day and they're contributing to the society in general. Right. So I think it is a holistic thing that is important. I think the talent is there, the infrastructure is developing right now. We have support from public-private sectors actually. So I think we just have to look out for opportunities, grab the opportunity right time. This is the most important. I think you are in the right place, right time, grab the opportunity and use it to the maximal benefit that you have. One last question. हमारे यहाँ से बहुत लोग इलाज कराने के लिए विदेश जाया करते थे. अभी नहीं हम सुनते थे. अभी नहीं साहब, हम सुनते थे कि लोग इलाज कराने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं. नहीं साहब, अभी तो the waiting period in some of these developed countries is almost 6 months. Suppose be it for any cold orthopedics ho, prosthetic surgery ho, the waiting time for cold surgery is almost 6 months. It is very impractical. Impractical, and lot of these countries are outsourcing the healthcare services to India. And if you see weekends, majority of the people come from these places to India to get surgeries done and then go back. It is far cheaper for them to travel, get the surgery done, spend time with their families and go back. So your hospital also is getting patients from outside? Huge number. Huge numbers. Congratulations, Dr. Rao. Thank you, sir. Congratulations. Thank you so much, sir. We are really proud of. Thank you for the confidence that you reposed on us, getting your family members to our place. It's a tremendous thing for you, for a doctor of your repute, to get your family members to our place all the way from Varanasi, sir. Thank you so much for the confidence that you reposed on us. हमारे देश में जो डॉक्टर राव और AIG हॉस्पिटल, आई विल टेक द नेम ऑफ डॉक्टर रेस्पेक्टेड डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ऑल्सो. आप दोनों लोगों ने जो हॉस्पिटल यहाँ हैदराबाद में बनाया है, उस हॉस्पिटल में आज विदेश से लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है. और मैं समझता हूँ कि हवा बिल्कुल उल्टी बह रही है और हमारे देश के हर नागरिक को ये कोशिश करना चाहिए कि इस उल्टी जो हवा बह चली है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ, उसको थोड़ा सा और तेजी से बहाएं और सुनामी में बदलें. और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास टैलेंट बहुत है. ये आपने शेयर किया, मैं भी सोचता था इसके बारे में कि टैलेंट बहुत है और हमारा ही टैलेंट बाहर जाके काम करता था. तो अब हमारा टैलेंट वापस आ रहा है, यहाँ पे है. तो आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि हमारे देश का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से सेफ, अच्छे तरह से
बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य होने जा रहा है। और इस सब के सबूत ये हैं कि बाहर से जो हम सुनते थे कि लोग इलाज कराने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अब हम ये सुन रहे हैं कि वहाँ से लोग भारी संख्या में भारत आ रहे हैं। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। आपको धन्यवाद, AIG हॉस्पिटल को धन्यवाद। और इस ये जो संस्था आपकी AIG है, ये मैंने सुना कि इसके पास एक ऑडिटोरियम है एजुकेशनल, जो कि अगले 6 महीने तक आपके अपने डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए 6 महीने तक बुक है। तो इतना एकेडमिक वर्क आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे हमारे पूरे देश के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या जितने भी जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, कहीं ना कहीं इस बात को उनको भी ये नॉलेज में आना चाहिए कि एक हॉस्पिटल में जहाँ 400 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इनका ऑडिटोरियम एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए, अपने हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़ के लिए 6 महीने तक के लिए बुक है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। ग्रेट थिंग सर। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और बनारस ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आपने समय दिया, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बनारस ग्लोबल टाइम्स की तरफ से हम पूर्वांचल के जितने भी हमारे दर्शक हैं और जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है, हम इस बात को पहुँचाएंगे कि एक डॉक्टर और एक अस्पताल, ये जो हैदराबाद में है और काफ़ी पुराना है, और एक हमारे डॉक्टर VK दीक्षित हैं बनारस में, वो हमारे डॉक्टर VK दीक्षित BHU में है, जो कि मेरे MBBS के बैचमेट हैं। 1978 बैच में MBBS में डॉक्टर RK ओझा, मैं और डॉक्टर VK दीक्षित, हम लोग सेम बैच के थे। और आज ये बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर VK दीक्षित सर, GV राव सर के भी काफी बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, और एकेडमिकली आप लोग काफ़ी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और हम ये अपने देश की एक जो उन्नति की तरफ जो हम जा रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं देते हुए हम लोग अपने इस वार्ता को आज खत्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर कभी टाइम मिलेगा, आप बनारस आएंगे तो, या मैं हैदराबाद आऊंगा तो हम फिर साथ साथ बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।